कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सबसे आम चीजें होती हैं, जैसे कि ये हाँ, ब्रेड का एक मामूली सा टुकड़ा, हम इस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं, है ना? पर इसका सफर असल में शुरू कहाँ से होता है? कुछ ऐसा दिखता है वो। हाँ बिल्कुल, इसकी शुरुआत होती है धूप में लहलहाते हुए गेहूं के खेतों से। सोचिए, एक छोटे से पौधे से लेकर हमारी प्लेट तक का सफर। ये एक लंबी और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए आज एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की दुनिया में चलते हैं और इस एक ब्रेड के टुकड़े के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक पौधे से प्रोडक्ट तक का सफर। हम देखने वाले हैं कि गेहूं का एक एक दाना आखिर कहां से होकर गुजरता है। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है एक किसान से, जो पहले तो जमीन को तैयार करता है, फिर गेहूं उगाया जाता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है। इसके बाद ये पहुंचता है मंडी में बिकने के लिए और आखिर में कारखाने इसी गेहूं से पहले आटा बनाते हैं और फिर हमारी ब्रेड। तो देखा, ये पूरी प्रक्रिया कई अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है। अच्छा, इस पूरे सफर को अगर और भी आसानी से समझना हो तो पता है हम क्या कर सकते हैं? हम इसे 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधियों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि प्राथमिक गतिविधियां। अब ये क्या है? इसमें वो सारे काम आते हैं जो सीधे सीधे कुदरत से मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने और उनके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। हमारी इस ब्रेड वाली कहानी में जो किसान का काम है ना, वो बिल्कुल यही है। जैसे कि फसल उगाना। इस तस्वीर में धान की खेती देख रहे हैं ना, ये प्राइमरी एक्टिविटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हाँ, सिर्फ खेती ही नहीं, मछली पकड़ना हो या फिर जंगलों से कोई चीज इकट्ठा करना हो, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, खेती हर कहीं नहीं की जा सकती। इसके लिए चाहिए होती है कृषि योग्य भूमि, मतलब ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी और मौसम दोनों सही हों। दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही असल में खेती के लायक है और ये बात हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर। ये हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज या कह लीजिए द्वितीयक गतिविधियां। अब इसमें क्या होता है? इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस किया जाता है, मतलब उनका रूप बदला जाता है। तो हमारी कहानी में यही वही स्टेप है जहां गेहूं से आटा बनता है और फिर उस आटे से तैयार होती है हमारी ब्रेड। वैसे स्टील बनाना हो या कपड़ा बुनना, ये सब भी सेकेंडरी एक्टिविटीज के ही एग्जाम्पल्स हैं। और फिर आखिर में आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज यानी तृतीयक गतिविधियां। अब ये थोड़ी अलग हैं, ये खुद कुछ बनाती नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज देकर सपोर्ट करती हैं। जरा सोचिए, ट्रांसपोर्ट के बिना गेहूं फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा और ब्रेड दुकान तक कैसे आएगी? या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, इनके बिना ये पूरा का पूरा कारोबार चलेगा कैसे? असल में ये तीनों एक्टिविटीज ना एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं और ये सब मिलकर ही हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर खेत थोड़ा अलग तरह का हो? मतलब ऐसा खेत जहां फसल सिर्फ एक परिवार का पेट भरने के लिए उगाई जा रही हो, बेचने के लिए नहीं। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है और यही सवाल हमें ले जाता है खेती के 2 बिल्कुल अलग अलग रूपों की तरफ। एक वो खेती जो सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है और दूसरी वो जिसका सीधा मकसद होता है बिजनेस करना। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि। यहाँ मकसद बस अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना है। टेक्नोलॉजी कम होती है, घर के लोग ही मेहनत करते हैं और पैदावार भी छोटी होती है। वहीं दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्यिक कृषि। इसका एक ही गोल है, मार्केट में बेचना। यहाँ पैसा भी खूब लगता है और बड़ी बड़ी मशीनें भी, ताकि पैदावार बहुत ज्यादा हो। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 2 खेतों की कहानी देखते हैं। एक है भारत में और दूसरा है अमेरिका में। ये तस्वीरें ना इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ भारत का एक छोटा सा खेत है जहां शायद पूरा परिवार मिलकर हाथों से काम कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा फार्म जहां एक अकेली मशीन ही सैकड़ों हेक्टेयर में फैली फसल को काट रही है। टेक्नोलॉजी में, जमीन के साइज में और काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है वाकई। लेकिन ठहरिए, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ गेहूं या चावल उगाना ही नहीं होता।
चलिए, गेहूं के खेतों से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, क्योंकि कृषि का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एग्रीकल्चर सिर्फ अनाज तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें कई और भी दिलचस्प चीजें शामिल हैं, जैसे कि विटिकल्चर, जिसमें अंगूर उगाए जाते हैं, सेरीकल्चर, जिससे हमें रेशम मिलता है, ये रेशम के कीड़ों को पालकर किया जाता है। फिर है पिसीकल्चर, यानी मछली पालन, और हॉर्टिकल्चर, जिसमें फल, सब्जियां और तरह तरह के फूल उगाए जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से बीज से लेकर ब्रेड के एक मामूली टुकड़े तक का सफर हमें एक पूरे ग्लोबल सिस्टम से जोड़ देता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा मिला-जुला नेटवर्क है। तो अगली बार जब थाली में खाना हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उस थाली में जो कुछ भी है, उसने वहां तक पहुंचने के लिए आखिर कितना लंबा और कैसा सफर तय किया होगा। Have you ever really stopped to think about where your food comes from? I mean, really think about it. It's this incredible story that starts with just one tiny seed and blossoms into a global system that powers our entire world. It's a story that has literally shaped all of human history. So let's dive in and explore the story of agriculture. It all begins right here, in a field somewhere. A farmer plants a grain of wheat, it's harvested, it gets ground into flour, and then it's baked into the bread you might have had for breakfast. That whole transformation, that's what agriculture is all about. And it is the foundation of, well, pretty much everything. All right, so here's our game plan. We're going to trace that entire journey. We'll start with how farming fits into the economy. Then we'll look at the farm itself as a system, compare different ways of farming, see what actually makes a crop grow, and finally tackle the huge question of how we're going to feed our growing planet. To really get a handle on agriculture's role, we first need to see where it fits in the grand scheme of our economy. Okay, think of it in 3 simple steps. First, you've got your primary activities, like farming. This is where we take stuff directly from the earth. Then you've got secondary activities. That's where we process those raw materials, turning that wheat into bread. And finally, tertiary activities are all the services that make it happen. The trucks that move the flour, the bank that gives the farmer a loan, the whole support network. So agriculture is a primary activity. It's this amazing mix of science and art, of working with the land. And it's not just some small industry. Get this, about half of the entire world's population is involved in it somehow. It is the absolute bedrock of our food supply. Now, let's zoom in from that big picture economy right down to the farm itself. Because a farm isn't just a patch of dirt, it's a dynamic living system. And this is the most crucial thing to understand. Every single farm works like a system. You've got stuff you put in, we call those the inputs. Then you have the actions the farmer takes, those are the processes. And finally, you get something out, the outputs. So let's break down those inputs, because that's where it all starts. First up, you have the physical inputs. Think of these as gifts from nature. A farmer can't just order more sunshine or change the temperature. The quality of the soil, the slope of the land, these are the non-negotiable conditions you have to work with. They're the cards you're dealt. But then you've got the human inputs. Now this is the farmer's toolkit. This is where they get to make choices. The seeds they plant, the machines they use, the fertilizers they add, the people they hire. These are all the things a farmer can control to try and manage that system and hopefully master it. Now, what's so powerful about this map is that it shows you the result of all those physical inputs we just talked about. You see, you can't just farm anywhere on Earth. These green patches, that's the world's arable land. These are the sweet spots where the soil, the climate, and the landscape all come together just right. It's a really vivid reminder of how much we depend on these specific conditions, and just how precious and limited this land truly is. So, depending on all those available inputs, and of course the farmer's own goals, 2 very different paths for farming have emerged all over the world. On one path, you've got subsistence farming. The goal here is really simple: feed your family. That's it. It usually involves traditional tools, household labor, and the output is pretty small. But on the other path, you have commercial farming, and that is a whole different ballgame. This is business. The goal is to sell crops and animals on the open market, and that requires massive amounts of land, machinery, and money. Let's dig a little deeper into that subsistence farming side of things, specifically a couple of the most ancient and mobile methods that are actually still practiced today. Take a look at this. This is nomadic herding.
In really tough places like the semi-arid lands of the Sahara or the rugged terrain of Central Asia, herders move with their animals, camels, sheep, goats, following ancient, well-defined routes. Now, why do they do this? It's a brilliant adaptation. It's their direct response to a harsh climate, a constant rhythmic search for that precious food and water for their animals. Another totally fascinating method is something called shifting cultivation, which you might know as slash and burn. In really dense tropical forests, like in the Amazon basin, farmers clear a small plot of land and burn the vegetation. That ash acts as a natural fertilizer for the soil, and they can grow crops there for a few years. But here's the key part. Once the soil's nutrients are used up, they abandon the plot and move on, allowing the forest to slowly reclaim it and regenerate the land behind them. Okay, so we've seen how people farm, but now let's talk about what they farm. Because just like a good recipe, every single crop has its own very specific list of ingredients it absolutely needs to thrive. First, let's do a quick vocab lesson. Think of these as your study notes. Horticulture, that's the commercial growing of veggies, flowers, and fruits. Sericulture, that's the super specialized business of raising silkworms to produce silk. And pisciculture, well, that's just a fancy word for fish farming in special tanks and ponds. Pretty handy terms to know. And this table just brilliantly illustrates how specific those needs are. I mean, just look at rice. It needs high temps, tons of humidity, and a clay-like soil that can hold all that water. Wheat, on the other hand, is totally different. It likes things moderate, with well-drained, loamy soil. And then there's cotton, which needs serious heat but not a lot of rain, and more than 200 days without frost to do its thing. Every single crop has its own unique, non-negotiable recipe for success. So we've got all these different farming systems and all these very specific crop needs, which of course leads to the really big question. How do we use all this knowledge to feed a world population that's growing faster and faster? Well, that's where this term comes in, agricultural development. And this isn't just a textbook concept. This is a global mission. It's the name for all the efforts we're making, as a planet, to ramp up farm production to meet that ever-growing demand for food. So how do we actually do it? Well, there's a whole toolkit of strategies. We can increase the amount of land we use for farming. We can get smarter with the land we already have by growing multiple crops a year. We can improve irrigation to get water to where it's needed most. We can use better fertilizers and high-yield seeds. And of course, we can supercharge efficiency with machines. And this is the bottom line. This is the why. The whole point of developing agriculture, from the tiniest subsistence farm to the biggest commercial operation, is to achieve something called food security. It's about making sure that every single person has access to enough safe, nutritious food to live a healthy and active life. And that brings us to our final thought for today. As we look to a future with billions more people and a climate that is constantly changing, which of these systems, from those ancient nomadic routes to the high-tech commercial farms, which ones are we going to rely on most? What's the right recipe for feeding the world of tomorrow?